Class 11. Now next certain important results regarding inequalities that you have to learn, as well as you have to see how you are going to apply them for solving of inequalities. Okay, so this I had discussed with you when we were dealing with the domain of functions. Okay, so there I had given you a hint about this result, and here now we'll study it properly in detail. So this result first you need to learn, and then I'll take up examples showing how to apply it. Okay, so if modulus of any x is smaller than some real number a, okay, then this x, the solution or the range of this x comes from minus of this a to the positive of this. Okay, so you have to learn this, or this is in form of inequality, and if I write it as interval, it will be written as from minus a to a all the values would satisfy this inequality. And if there was an equal to sign, obviously a and minus a will also be included, not only the values in between but extremities also included. So you'll represent it by a closed interval rectangular bracket, right? Okay, the contrary, अभी ये तो स्मॉलर देन में था फ्रॉम माइनस ऑफ ए टू ए. अभी अगर ये ग्रेटर देन का साइन होता है तो इट इज द रिमेनिंग portion of the number line. You see here they have shown you, this is your entire number line, and these are your points minus of a and plus of a. Okay, so the whole number line has been divided into 3 portions. तो अभी जो हमने method of interval पढ़ा है देखो उससे भी आ रहा है, right? What did we say? We start with the rightmost region being positive, then negative, and then positive again, like that. Okay, तो अभी हमारा sign of inequality अगर negative का है, smaller than का है, तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा फ्रॉम माइनस ऑफ ए टू ए. एंड जब ग्रेटर देन का साइन होगा, देन द रिमेनिंग portion of the number line, that is from minus infinity to minus a, and then from a to infinity. इन दोनों का यूनियन हो जाएगा. Okay, that is your second theorem. Here, see, now if this time the sign was of greater than, if modulus of any x is greater than a, then the solution will be either smaller than the negative value and greater than the positive value. Okay, तो इसको इंटरवल फॉर्म में अगर हमें लिखना है, एंड ऑब्वियसली इफ इक्वल टू साइन इज देयर, देन यू नो कि आपको क्लोज ब्रैकेट लेना है. सो इफ यू हैव टू राइट इट एज इंटरवल, देन यू विल बी राइटिंग इट एज, this will be written as minus infinity comma minus a union a comma infinity. Okay, so these are the two results that you need to actually know and learn properly. And then there are many more results also given out here, children, I can see here. Okay, so well and good if you can learn them, but they are not really very important, I should say, or really required, I should say rather, because even if you know these two basic results that I just told you, okay, तो ये automatically इनका conclusion या इनका answer बन जाता है. Okay, so remembering too many results is also a tedious job for us. तो उतना सारा जब हमारा उसी result से ये conclusion भी निकल जाता है, then why do so much of learning? Okay, so if you can learn it and retain it and use it directly, I have no problem, but that is the minimum required, the two results that I just now told you. If you know those results, then with the help of those, even these results can automatically be drawn in the solving of the question itself. Okay, so now we'll see how to apply them. Okay, so like here you have this question, this inequality to be solved, which shows modulus of 4 minus x plus 1 is smaller than 3. ओके, तो वही बेसिक रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगी, एंड रेस्ट आई विल जस्ट मैनिपुलेट माय क्वेश्चन. सो हमें रिजल्ट किसके लिए पता है? मॉडुलस ऑफ एक्स वन साइड एंड अदर नंबर द अदर साइड. ओके, सो आई एम ब्रिंगिंग इट फर्स्ट इन दैट फॉर्म. सो यहाँ पे जो ये +1 था, दिस आई हैव टेकन टू द अदर साइड. 3 minus 1 that becomes 2. So this is modulus of, suppose this whole was x. Okay, ये पूरा modulus of x is smaller than some a. So your a is 2 out here, and in place of x you have 4 minus x. So if you apply this result, जब smaller than का sign था तो हमने क्या बोला था? Range will be from minus of this a to positive of the a. So this is in place of your x. So this entire thing, that is 4 minus x, will be from minus of this a to the plus of this a. तो ये result हमने use कर लिया है, simply replacing our x by 4 minus x. Okay, now rest we know this is now in a form with that we have already practiced. अगर ऐसी inequality आती है, first we'll remove this 4. For that we'll do minus 4 all the sides. Minus 2 minus 4 becomes minus 6, plus 2 minus 4 becomes minus 2, and minus 4 plus 4 cancel. This remains only as minus of x.
Further, we'll find x from here obviously. So we'll multiply throughout by negative sign. And if you are multiplying by negative, the sign of inequality reversed. So smaller than का greater than बन गया यहाँ पे. This will become plus 6, plus x and plus 2. You get your solution. We know the range of x. So x would be from 2 to 6. Interval में obviously up, the smaller number comes to the left. So we write it as 2 comma 6. This will be your solution. Okay. Now the next one here we have is, we have a modulus of x minus 2 upon x minus 2 is greater than 0. So for this children, you just need to give कि x की क्या range होनी चाहिए for this whole inequality to be positive, to be greater than 0. So in questions of inequality beta, we just need to focus on what is affecting the sign of the inequality. ओके तो पॉजिटिव जो चीजें होती हैं आप उन्हें ड्रॉप भी कर सकते हो, बिकॉज पॉजिटिव व्हेन वी आर श्योर कि ये चीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डज नॉट चेंज द साइन, जो साइन होता है वो वैसा ही रहता है. तो लाइक हियर इन द न्यूमरेटर आई सी मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 रिटन. तो x चाहे कुछ भी हो, जब आप उसका x माइनस 2 का मॉड्यूलस करोगे तो मॉड्यूलस तो पॉजिटिव ही आता है. दैट इज व्हाट मॉड्यूलस मीन्स. मॉड्यूलस मीन्स अ पॉजिटिव वैल्यू. सो वी आर वेरी क्लियर एंड श्योर दैट दिस न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी, whatever be the value of x, this numerator has to be positive, being modulus. So the sign of the inequality depends only upon the denominator here. अगर denominator positive है तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव. अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, यस इनइक्वालिटी नेगेटिव हो जाएगी. ओके तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी वुड एक्चुअली डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर हियर x minus 2. Okay so we can just convert this as, this inequality or this whole expression being positive is equivalent to saying that this denominator factor is positive. अगर ये पॉजिटिव तो रिजल्टेंट ये पूरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो जाता. यू गेट दैट. तो लॉजिकली करना पड़ता है हमको. ओके लाइक हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी कहीं ना कहीं लॉजिक लगाया था इन केस ऑफ इनइक्वालिटीज. सो सेम वे हियर वी कैन ड्रॉप आउट सर्टन थिंग्स इफ दे आर, वी आर वेरी श्योर दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. सो वी जस्ट नीड टू फोकस कि साइन किस पे डिपेंड कर रहा है. तो इस क्वेश्चन के लिए आप बाकी सब छोड़ दो, आप बस इतने को रखो. ओके अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव होगा क्लियरली. सो आई हैव रिड्यूस्ड दिस एज, दिस बीइंग पॉजिटिव इज इक्वल टू x माइनस 2 बीइंग पॉजिटिव एंड दैट विल बी पॉजिटिव व्हेन. अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल इनइक्वालिटी होगी एडिंग 2. सो यू गेट x शुड बी ग्रेटर देन 2. सो योर सोल्यूशन विल बी from 2 to infinity. Whenever x is from 2 to infinity, this expression will be positive, or this inequality will come out to be positive. Okay, now look at this one. You have 1 upon modulus of x minus 3 smaller than 1 by 2. Okay, so अब इसमें अभी ये कोई भी हम इसमें रिजल्ट हमने क्या मेथड ऑफ इंटरवल पढ़ा है, फिर ये रिजल्ट्स पढ़े हैं मॉडुलस वाले. एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट इन एनी ऑफ द स्टेट कि वी कैन अप्लाई एनी ऑफ द रिजल्ट्स दैट वी नो. ओके सो टू मेक आवर वर्किंग ईजी, क्योंकि यहाँ मॉडुलस है दैट माइट क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर अस, सो वी आर जस्ट टू मेक आवर राइटिंग सिंपलर वी आर गोइंग टू अज्यूम दिस मॉडुलस ऑफ एक्स एज y. Then this expression becomes 1 upon y minus 3. ये हाफ हम इधर लाएंगे बिकॉज हम मेथड ऑफ इंटरवल से करेंगे क्वेश्चन को. सो फॉर दैट वी हैड सीन इन आवर अर्लियर डिस्कशंस दैट वी शुड हैव अ जीरो द अदर साइड, आइदर स्मॉलर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो. तो क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव है, क्वांटिटी पूरी नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड कर सकती हूँ कब पॉजिटिव एंड कब नेगेटिव होगा. ओके सो वी नीड टू हैव अ जीरो द अदर साइड. सो आई हैव टेकन दिस हाफ हियर. Naturally next step would be to take LCM. So if you take LCM, ये आपका न्यूमरेटर 2 हो जाएगा. This will be cross multiplied here. So minus y minus minus plus 3. I have simplified it, cut it short. Okay. High time. We've been doing many questions. We can do that much mentally now. Okay. फिर आपका डिनोमिनेटर में बचेगा upon 2 into x minus 3. Sorry, y minus 3. So next step you all remember we need to multiply by square of the factor we have in denominator. तो हमने y minus 3 square से multiply किया तो one of the y minus 3 cancelled, we are left with a single y minus 3 in numerator. You can cut it short. तो हम ये फैक्टर जो डिनोमिनेटर का था इसको भी ऊपर ले आए, क्योंकि हमारा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर ऑफ द फैक्टर इन डिनोमिनेटर. 2 भी था, आई हैव ड्रॉप दैट 2. जिस ना अभी मैंने ऊपर आपको बोला था कि इनइक्वालिटी में जिनका हमें श्योर है कि साइन को अफेक्ट नहीं कर रही है जो चीज़ें, वी कैन ड्रॉप इट. जैसे वहाँ हमने मॉडुलस ड्रॉप किया था तो यहाँ 2 मैंने ड्रॉप कर दिया है, बिकॉज 2 इज अ पॉजिटिव नंबर दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द साइन. वी आर जस्ट डिसाइडिंग और वर्किंग फॉर द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, कब पॉजिटिव हो रही है कब नेगेटिव.
Do you get that? So I've cut it short here, certain steps. We've taken LCM, then we've applied that logic of multiplying by the square of what we have in denominator, and because that 2 was not affecting the sign, so I've dropped that 2 as well. These are the two linear factors you get. Our ultimate aim is to get linear factors so that we can apply method of intervals. Okay, so these were the two linear factors you got. 5 minus y, right? लेकिन अगेन वेरिएबल को हम नेगेटिव नहीं करते हैं, तो हमने इसे फर्दर माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट दिस बिकम्स y माइनस 5. एंड अगर मल्टीप्लाई किया है माइनस से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा. ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा. द ओनली थिंग इज आपको थोड़ा फोकस करना है. ओके, सब रिटेन करना है कि व्हाट वी नीड टू डू स्टेप आफ्टर स्टेप. तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी मैंने रिवर्स कर दिया, वेरिएबल मैंने पॉजिटिव बना दिया, and I've brought it as linear factors, and now this is in a position where we can apply a method of intervals, for which I need to plot these points. So y is equal to 3 and y is equal to 5 are my 2 points on the number line. So the number line is divided into 3 regions. We start with the rightmost being positive, negative, positive, and here we were looking for positive sign. So solution bana ek aapka ki y should be smaller than 3, minus infinity to 3, and 5 to infinity. 5 to infinity means greater than 5. So these are my two intervals from method of interval. Now ये तो y का solution है, but आपको तो x का देना था, वो तो हमने अपने calculation के लिए, convenience के लिए modulus of x को y रखा था. So we need to get back to replacing our y by modulus of x. So y being smaller than 3 actually means modulus of x is smaller than 3, and now the result that we were talking about, that whenever modulus of any x is smaller than some a, then x ranges from minus of that a to plus of that a. ये result आ गया आपका. Then next go up this here, this side also, if you put replace y by its modulus of x, it is greater than sign now. तो greater than sign में क्या था result? From minus infinity to the minus of value, and from the plus to plus infinity. Okay, तो greater than sign में ये होता है, smaller में from minus to this, ये remaining interval होता है, just now I explained. Right? अब next last you have to merge all these results. Okay, so ये आपका आधा solution यहाँ था, आधा ये था, आप इनको merge कर लो. And to write it systematically, हम left hand side से start करते हैं. तो सबसे पहले ये interval आएगा minus infinity to minus 5. Next point that comes is from minus of 3 to 3. Then comes up 5 to infinity. That's your results. Okay. Now question 6 is another typical example. Here they have given modulus of x plus 2, then minus of x upon x and smaller than 2. ओके, तो अभी ऊपर तो हमने पूरा मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू y रख लिया था, बट यहाँ पे अभी आप देखो x बाहर भी है एंड देन ये x मॉडुलस साइन में भी है, तो वी कैन नॉट, अगर पूरा ही सब जगह मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 होता है, आई कुड हैव केप्ट इट एज y एंड प्रोसीडेड लाइक अबव. बट यहाँ पे आई एम एट फिक्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे x अलग से दिख रहा है एंड यहाँ मॉडुलस के अंदर x प्लस 2 है. ओके, तो ऐसे केसेस में वी ब्रेक द मॉडुलस का डेफिनेशन. इफ यू रिमेंबर मॉडुलस ऑफ x को हमने डिफाइन किया था फंक्शंस वाले चैप्टर में, तो मॉडुलस ऑफ x वाज वंस x वी यूज्ड टू कीप फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, माइनस ऑफ x फॉर नेगेटिव वैल्यूज, बिकॉज माइनस माइनस देन बिकम्स प्लस, एंड दैट इज व्हाट मॉडुलस मीन्स कि पॉजिटिव वैल्यू लो. ओके, सो सेम डेफिनेशन इज बीइंग एक्सटेंडेड हियर, that this expression that is in modulus, that is x plus 2, would be either positive or would be negative. So when will it be positive? It will be positive when this is greater than 0, means this is greater than minus of 2. तो उधर ले जाओगे, तो when x is greater than minus 2, this quantity will be positive. And अगर ये positive है तो हम इसे as it is रख लेते हैं. And for the remaining, that is when x will be smaller than minus 2, the quantity will become negative, so we'll have to give it another negative sign, so that negative negative makes it modulus positive. Okay, so that is how we break definition of modulus. That's important, required every now and then. Okay, so अब इसमें आपको क्या करना है, अब आप इसमें cases लेने पड़ते हैं. When is the expression positive? When is the expression negative? So first we are considering for all values of x being smaller than minus 2. That we got from here जब हमने definition या modulus break out किया, right? So when x is smaller than minus 2, then this expression has to be negative, right? तो आप ये जो modulus of x plus 2 था, इसकी जगह minus x minus 2 रख दोगे, क्योंकि इस रेंज में, ये जो आपने मेंशन किया है, इस रेंज में this expression should have a negative sign. Okay,
So you change it like this. बाकी as it is copy हो जाएगा, minus of x upon x, and this 2 obviously I'll get to this side because remember we need a 0 the other side, so that becomes minus 2. Next you have to take LCM. So ये आपका बन रहा है यहाँ से minus x, that's minus 2x minus 2, and this also gives you minus 2x. Then again multiplying by square of what we have in denominator, वो factor numerator में आ जाता है, denominator से गायब हो गया, cancel होके. So these are the two linear factors now we have got. Minus 4x minus 2 से हमने minus common ले लिया again because variable should not be negative. Okay, so that minus 2 भी आप common ले सकते थे. In the next step I have done that. Or minus of 2 you could have taken common, dropped that negative 2 या dividing by negative 2 throughout कहो, जैसे आपको समझ में आता है. So the two linear factors you end up getting would be 2x plus 1 and x, and will now become greater than 0 क्योंकि आपने माइनस से डिविजन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, वॉट एवर, राइट. सो फ्रॉम हियर योर टू पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन आर, दिस गिव्स यू -1/2, the other one gives you 0. Okay, equating this you get x is equal to 0. So again the number line into 3 regions, plus minus plus, and we were looking for साइन इक्वालिटी का हमारा अल्टीमेटली था पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0. तो ग्रेटर देन 0 कब आ रहा है? फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1/2 एंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. अब इसमें फर्दर आपको चेक लगाना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू कीप इन माइंड कि दिस इनइक्वालिटी एग्जिस्टेड ओनली व्हेन, आपने केस लिया था ना, ओनली व्हेन x इज स्मॉलर देन -2. ओके, सो व्हेन x इज स्मॉलर देन -2 then all values that you get above -2 have to be rejected. That is how you have to understand. क्योंकि above then -2 में ये inequality ऐसी होगी ही नहीं. Do you get that? ये inequality ऐसी तभी आएगी when x will be smaller than -2. So from this solution that we are obtaining, we can only pick up values which are smaller than -2. तो इसका solution फाइन अल्टीमेटली क्या आएगा? ये रेंज में तो पॉजिटिव था ही, बट हम आके -2 पे रुक जाएंगे. ओके, बिकॉज -2 से नीचे ही ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर ये एक्सप्रेशन कुछ और होगा. दैट वुड बी अ केस 2. सो फ्रॉम हियर योर सोल्यूशन वुड बी x is from -infinity to -2. Now move on to case 2 when we would say x is greater than -2, then the expression will be positive. तो अब आप इसमें नेगेटिव साइन नहीं दोगे, इसे एज इट इज रख लोगे. तो x + 2 -x अपॉन x, एंड ऑफकोर्स -2 स्मॉलर देन 0, रेस्ट हैज टू बी कॉपीड. के तो यहाँ +x -x बैलेंस हो जा रहा है. टेकिंग LCM यू आर गेटिंग द फैक्टर्स एज 2 फ्रॉम हियर एंड -2x, एंड देन दिस x ऑल्सो हैज टू कम टू न्यूमरेटर ऑफ कोर्स. सो यू गॉट योर टू लीनियर फैक्टर्स. अब यहाँ पे भी x आपका नेगेटिव था, देखो फिर आपको -2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, या 2 आप ड्रॉप कर दो, विच एवर वे यू अंडरस्टैंड. सो आपके लीनियर फैक्टर्स आएंगे. इवन इफ यू लीव इट एज 2x - 2, you'll get the point, critical point the same. So that doesn't make a difference. Okay, so don't panic, you can leave it as 2 also there. So anyways, if I've changed the multiplied it by negative to make my variable positive, I need to change the sign of inequality also. That has to be kept in mind. So the two factors giving you 2 points, 0 and 1. This is your number line, and this is where it is positive and negative. We were again looking for positive values. The positive values go from -infinity to 0 and from 1 to infinity back to where this inequality existed. That was from -2 upwards. तो -2 कहीं यहाँ पर है, उससे नीचे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. उससे नीचे हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी केस 1 में. तो आपका सोल्यूशन चाहे यहाँ पे दिख रहा है फ्रॉम -infinity to 0, बट आप वैल्यूज लोगे यहाँ से ऊपर की. So it would be from -2 to 0 and from 1 to infinity. Get that? Okay. अभी उधर से हमारा क्या solution आया था? उधर से solution आया था from -infinity to -2. Okay. Now we need to combine both the results. वो case 1 and case 2 हमने break कर ली थी number line अपनी. Smaller than -2 में क्या and greater than -2 में क्या. So this union this हो रहा है actually. Okay, so if you go to see -infinity to -2 आप यहाँ पहुंचे, फिर -2 to 0 यहाँ आ जा रहा है. तो you can merge these two. इन दोनों इंटरवल्स को मर्ज किया जा सकता है. मीन सारी वैल्यूज आ गई. -infinity to -2 ये आया, -2 to 0 यहाँ आ गया. तो it's actually from -infinity to 0. So in writing the final answer we can write this result as -infinity to 0, देन बीच में बस हमारा 0 to 1 वैल्यूज छूट रही हैं, एंड 1 to infinity.
So for this entire range would be the inequality that is given to us.